Good morning, students. Last time I discussed with you about ionization enthalpy, successive ionization enthalpy, and strength in the periodic table. Now, the next periodic property is electron gain enthalpy, which is exactly opposite to that of ionization enthalpy. In case of ionization enthalpy is the amount of energy required to remove electron, and here is the amount of energy released when isolated gaseous atom accepts electron. So, for understanding purposes, we can write it in this manner. X in a gaseous state. When it gains electron, it becomes anion and certain amount of energy is released. Nucleus attracts electron, accommodates its valence shell, as a result some energy is released. So when it gains one electron, the energy is released, means that in that case it is an exothermic reaction. But second electron gain enthalpy becomes positive. Third electron gain enthalpy becomes positive. Why? Only first electron gain enthalpy is negative, exothermic, while next, second, third, fourth are positive. So why second electron gain enthalpy is positive? After accepting electron, it becomes anion. And it is difficult for anion to gain electron due to like charge. Instead of accepting, they repel each other. The second electron therapy is positive only if it gains electron. So we have to forcibly introduce the electron. If we forcibly introduce the electron means we have to supply some energy. And if we supply some energy, then the reaction becomes endothermic. And for endothermic, the sign is positive. And that's why second electron gain enthalpy is always positive. Then what is successive electron gain enthalpy? Second electron gain enthalpy is the amount of energy required when isolated gaseous ion accepts electron. So what is successive electron gain enthalpy? The amount of energy change when isolated gaseous atom or ion accepts electron one after another. Change. Why change? First is negative, afterward is positive. What are the factors affecting the electron gain enthalpy? Greater the attraction between the nucleus and incoming electron, more negative is the electron gain enthalpy. So, first is atomic radius size. Smaller the radius, higher will be the attraction between incoming electron and the nucleus. Hence, more negative is the electron gain enthalpy. Nuclear charge. Greater the nuclear charge, more negative is the electron gain enthalpy. Now, out of nitrogen, oxygen has more negative electron gain enthalpy. And out of oxygen and fluorine has more negative electron gain enthalpy. Out of boron and carbon has more electron. And next factor is electronic configuration. If an atom or ion acquires extra stability means exactly fully filled or exactly half filled sufficient. In that case, they will not prefer to gain electron.
So you have to supply nitrogen. As a result, the electron enthalpy becomes positive. In some cases, it becomes less negative. So when we move down the group, electron enthalpy becomes less and less negative. Only there are three exceptions. Boron, aluminum is less negative. Here is also negative. Phosphorus, arsenic, less negative. Sulfur, selenium, less negative. Then what about this one? Here are the positive values. Becomes more positive. Here they have extra stability. More positive. लेकिन यहाँ पे लेस नेगेटिव के बजाय मोर नेगेटिव आ रहा है. ये तीन एक्सेप्शंस है. रीजन सेम. ड्यू टू स्मॉल साइज the interelectronic repulsion in the valence shell are very high. For example, fluorine. In case of fluorine, due to small size, the interelectronic repulsions are very high, and they will not welcome the incoming electron, or it is difficult for them to welcome the incoming electron. But when we move from fluorine to chlorine, due to increase in shell, the electron distance increases. So interelectronic repulsion decreases. So they easily accept electron. And that is why the electron enthalpy of chlorine is more negative than fluorine. In spite of fluorine has small size, even then its value is less negative. The reason is due to small size, the interelectronic repulsions are very high. It is difficult to welcome the incoming electron. Same reason for oxygen and sulfur. In case of oxygen, due to small size, the interelectronic repulsions are very high. It is difficult for it to accept electron. But when we move from oxygen to sulfur, due to increase in size, interelectronic repulsion decreases. It is easier to gain electron. Hence the value becomes negative. Nitrogen to phosphorus, same size. Those small size, interelectronic repulsions are very high. But when we move from nitrogen to phosphorus, due to increase in size, तो ग्रुप में तो पता चल गया, अब पीरियड में चलना है. When we move from group 1 to group 2, the electron enthalpy becomes positive. The reason is due to NS2 configuration. But when we shift from beryllium to boron, the value becomes negative. Decrease in size, lack of extra stability. When we move from boron to carbon, the value further becomes negative. Same reason. But when we move from nitrogen to it becomes less negative or positive. In case of nitrogen is positive, and in this case is negative.
When from nitrogen to oxygen, it becomes negative, yeah, more negative, lacks the extra stability, and in this case, more negative. But in this case, becomes positive, and down the group, more positive. It is difficult for them. So sometimes some pairs are provided to you, and you have to give the answers. Which out of these two, sodium and magnesium, which one has more negative? Sodium, क्योंकि इसका तो पॉजिटिव होगा, तो बिना आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का बिना कॉन्फ़िगरेशन के आंसर देना ही नहीं, कहीं गलती कर जाएंगे, अदरवाइज तो सही से हो रहा है। और अगर हम कहें विच वन इज हायर, देन मैग्नीशियम इज हायर, क्योंकि ये नेगेटिव या पॉजिटिव। मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज नेगेटिव, क्योंकि इसका तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, but here is less negative, here is less negative, but in this case more negative, nitrogen to phosphorus more negative। तो आपने ये भी देखना है इंक्रीज हायर वैल्यू लिखा है या मोर नेगेटिव लिखा है या लेस नेगेटिव क्वेश्चन, और इसी ढंग से आउट ऑफ O एंड O नेगेटिव, अब O नेगेटिव है तो ब्लाइंडली इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। ऐसे O नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू अब दोनों की पॉजिटिव है इसमें, तो सिर्फ नेगेटिव कब होएगी, सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बाकी किसी के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव नहीं होगी, और दोनों की पॉजिटिव। लेकिन इसमें तो चार्ज ज्यादा होगा, इन दिस केस द मोर पॉजिटिव देन दिस वन, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ S2 नेगेटिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, पेयर्स की फॉर्म में, ग्रुप एंड पीरियड की फॉर्म में। तो ये मेन है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, डाउन द ग्रुप मोर पॉजिटिव होगा, या बाकी जहाँ पे नेगेटिव आता है लेस नेगेटिव। और ये तीन तो अच्छी तरह रिमेंबर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये +2 में भी आएंगे, क्योंकि आपके इस साल ये डिलीट हो चुके ग्रुप 15, तो नेक्स्ट ईयर के सिलेबस में आ चुका है 15, 16, 17, 18। तो वहाँ पे जब पीरियोडिक ट्रेंड आएंगे तो वहाँ पे फिर दोबारा आपको लर्न करना। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं, और एक स्कूल्स में आमतौर पे ये क्वेश्चन किया जाता है, या तो ये वाला, या विच वन इज मोर नेगेटिव एंड व्हाई, विच वन इज लेस नेगेटिव एंड व्हाई, इस ढंग से क्वेश्चन किया जाता है। या सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसका आंसर भी आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा एक टर्म आपने 10th में पढ़ी है, उसको हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किया हुआ है, suppose A and B are the 2 atoms and they share electron pair, but this is not at center, they belong to atoms of different elements, different nuclei, different attracting power. Suppose the attracting power of B is more, so the electron pair slightly shift towards B, this carries partial negative charge
and this carries partial positive charge, it becomes polar. This is more electronegative. This and this is lesser electronegative or more electropositive. So electronegativity means the power by which an atom attracts shared pair of electrons towards itself. Sometimes it is asked in electronegativity, electron is attracted towards the nucleus, energy is released. In electronegativity also, electron is attracted towards the nucleus. Then what is the difference between two? In electron gain enthalpy, the energy is released. Here is the relative tendency. Which one has greater power to attract electron? Electron gain enthalpy deals with the property of an atom of element when it is in isolated gaseous state. But electronegativity deals with a covalently attached property of an atom in a covalently attached molecule. Covalently attached molecule. HCl, water, NH3, CO2. When it will becomes at the center, कब पॉसिबिलिटी है जब ये इलेक्ट्रॉन के सेंटर पे हो? जब होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा H2, दोनों की अट्रैक्टिव पावर बराबर, O2 दोनों की अट्रैक्टिव पावर बराबर, then they become shear. पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ट्रेंड है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस as you move left to right up to group 70 because हमें पता है ये कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते. And down the group decreases. यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10th में पढ़ा था एक मेटालिक प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है. तो मेटालिक प्रॉपर्टी अगर बढ़ेगी तो अट्रैक्टिव पावर कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. इलेक्ट्रोलाइट अट्रैक्टिव पावर इंक्रीज होगी. तो इस वजह से हम इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन. एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? सीजियम. फ्रांसियम को क्यों नहीं लिया? रेडियो एक्टिव. ये 10th में पढ़ा है. दिस स्पॉन्टेनियस एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स. तो इसलिए नॉट मच केमिस्ट्री इज नोन अबाउट दिस एलिमेंट. और इसके ढंग से रेडियम है और इसके बारे में कोई ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं आपको मिलेगी. नेक्स्ट इज फार्मूला पे बाइंडेड कंपाउंड्स. वैलेंसी पता हो कर सकते हैं. मैं कभी कह दूं Z इक्वल टू 11 एंड 16. Z 11 है तो 2 8 एंड 1. तो ये कौन हुआ? सोडियम. कितनी वैलेंसी? 1. 16 है तो क्या हुआ? 2 8 एंड 6. तो कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन. तो ये वैलेंसी कितनी हुई? 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना? Na2O. ये बुक में क्वेश्चन है. फार्मूला ऑफ बाइंडेड कंपाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ. आपको खुद वैलेंसी बतानी. ऐसे ही Z इक्वल टू 13 सल्फर.
13 and 17. तो 2 8 and 3 and 2 8 and 7. तो ये कौन है? एल्यूमिनियम। और ये कौन सा है? क्लोरीन। 3 1। तो फार्मूला क्या बन गया? AlCl3। and Z equal to 114 and Z equal to 8. तो इस केस में तो सिंपली आपको पीरियोडिक टेबल में बता दिया था। 114 तो 14th ग्रुप में, 115 तो 15th ग्रुप में, 104 तो 4th ग्रुप में, 108 8th ग्रुप में। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सॉरी यू क्यू और ये क्या है? 2 and 6। ये O है जिसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 4। तो 14th ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला हुआ। तो क्या बन गया? U क्यू O2, बिल्कुल जैसे CO2 लिखते हो, क्योंकि आपको से कट गया है। ये 2 and 4 से ये 2 and 1। तो बच्चे आमतौर पर ये वाला क्वेश्चन तो कम किया जाता है स्कूल के अंदर, ये काफी किया जाता है। ऐसा ही है नो 14 and 8। तो बच्चे Si2O4 लिखते हैं। बस कार्बन के लिए कार्बन इसी फैमिली का, तब तो CO2 लिखते हो। नहीं, गलत। 4 2 and 1 SiO2। यही अगर Z 114 and Z 9 होता तो 9 में क्या होगा? 2 and 7 क्लोरीन वाला। और यहाँ पे U क्यू ये 4 and 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? U क्यू F4। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया इस पीरियोडिक टेबल में कि ये क्या चक्कर है। फर्स्ट पीरियड में तो 2 एलिमेंट, सेकंड थर्ड में 8, फिर उसके बाद 18, फिर 32। तो ये क्वेश्चन बुक में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। जैसे मैं कभी कह दूं व्हाई 4th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? फोर्थ period of periodic table contains 18 elements। 18 elements क्यों है? 8 क्यों नहीं? 32 क्यों नहीं? तो आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होना चाहिए कि n-2 F, इसमें n-1 D N P NS 4th period। तो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है वो लिखना है। जो लास्ट में कौन सकता है? 4 - 2 2F 2F पॉसिबल नहीं है। 4 - 3 3D पॉसिबल है। D के लिए SPD 0 1 2, L की वैल्यू n से कम है। तो क्या हुआ? 3D 10 4P 6 4S2। So 4th period accommodates 10 plus 6 plus 2 means 18 elements। हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है।
आंसर आ गया। तो 6th में 32 क्यों है? वही 6th पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। क्यों? इसी को देखना है। 6 - 2 4x, तो 4x तो पॉसिबल है। सो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन 4x f 14 and 6 - 1 5p 10 5p 6 and 5 sorry 6p 6 and 6s 2 n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ n यहाँ पे 6 - 1 5, यहाँ 6 - 2 4, तो 6th period accommodates maximum 14 plus 10 plus 6 plus 2 32। ऐसे किसी भी पीरियड के अंदर आप ना बता सकते हो। थर्ड पीरियड में 3 - 2 1 पॉसिबल नहीं है। 3 - 2 1f नहीं पॉसिबल। 3 - 1 2d पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? 3p 6 3s 2 6 + 2 है। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। मतलब ये मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। कहीं पेज कट जाए, फट जाए, या आपको खुद ही बनानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत मेजर अचीवमेंट है। कहीं हर एक काम लॉजिक